Good morning, students. Welcome to the second chapter in Indian economic development, Indian economy between 1950 to 1990. In this chapter, we are first of all going to study about economic planning. In order to develop a country, we had to plan. When a country became independent in 1947, we set up a planning commission in 1950, and from 1951 we launched our 5-year plans. So first of all, let's see what is economic planning. It means utilization of country's resources in different development activities in accordance to national priorities. So first thing that we do is in economic planning that we see what our resources are. Then we see what our priorities are. And accordingly, when we plan how to use these resources in order to fulfill these priorities, the process is known as economic planning. Okay? Now, once we started economic planning, let us discuss why we had to do this planning. To avoid misuse of resources. When we are using resources and we are not planning ahead, then we end up misusing our resources. We end up wasting our resources on those places which might not be our priorities. To establish social justice. By social justice means the gap between rich and poor, the gap between various sections of the society should be reduced. When we launch economic plans for development, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच का गैप उन प्लानिंग के ड्यूरेशन में बढ़े, उसको कम होने के लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है. फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिसयूज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है दैट द रिसोर्स शुड बी पुट इन इट्स बेस्ट यूज. देन वी से दैट देयर इज efficient utilization of resources. Next we come to creation of infrastructure. In order to develop a country, in order to develop various sectors of our country, we need a strong infrastructure. इस infrastructure के अंदर means of transport, communication, power, health, education, ये सारी चीज़ें आती हैं. और जब तक हम plan नहीं करेंगे तब तक हम timely इस infrastructure को develop नहीं कर सकते, जिसकी मदद से हम economy को develop करना चाहते हैं. Okay, so now we come to the common goals of 5-year plans, which means कि 5-year plan जो हमारी first start हुई थी 1951 में, after 12 plans we stopped using this word 5-year plans because we developed a Niti Aayog instead of planning commission. लेकिन all these years जो हमने 5-year plans बनाई, from the first plan to the 12th plan, उनके कुछ common goals यहाँ पर mention हैं. These are the long term goals. Okay. Also, I'll show you in image 1 that there are certain short-term goals in individual plans. In the common goals of 5-year plans, the detail of which you must have seen by now, we see that there are certain ideas in the entire economic planning which need to be followed, namely growth, full employment, self-reliance, modernization and equity. These are 5 in number.
Okay, so these will be the underlying principles or goals in all the plannings, which means that starting from the first plan, whatever the short-term goals might be, these goals will not be neglected anyhow. We've already mentioned three. The fourth one is modernization, and the fifth one, equity. Okay, so there are five in number, right? First we come to growth. Growth or economic growth means an increase in output. Increase in output means production of goods and services should increase such that कि economic growth हुई, हमें इससे पता चलता है लोगों के पास पहले से ज़्यादा goods and services हों तो economic growth हुई है. Control on population. Economic growth का मतलब ये भी है, economic growth rate हमें तब नज़र आती है when our increase in goods and services is greater than increase in population. Otherwise वो वहीं पर हमारी कंपनसेट हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन उससे ज़्यादा बढ़ गई तो. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोग पहले से अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी एज आई मेंशन्ड अर्लियर इज प्रोडक्शन कैपेसिटी. wherever we have economic growth, the people become more efficient. उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लोगों की भी और रिसोर्सेज की भी बढ़ती है. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटा. There will be more means of transport, more means of communication and other infrastructure available to the people. This is commensurate to the economic growth. Next we come to full employment. By full employment we mean when all able people who are willing to work at the given wage rate are getting work to do. All people who are willing to work, those who want to work are getting work to do. Okay, so this is full employment, and the underlying condition is at the given wage rate, which means that whatever is the existing wage rate for them, if they are ready to work on that, then they will be employed. Once they want to do a job, they are getting a job. So this condition we call full employment. So this is the target in the entire planning, that we should seek full employment, which means economic growth should result in increase in employment. In every economic planning, in every individual plan, we should work towards increasing of employment also, which means that if the employment opportunities are not increased, whereas economic growth takes place, मतलब ये है goods and services पहले से ज़्यादा बढ़े लेकिन employment नहीं बढ़ा, तो उस situation को हम कहते हैं jobless growth. It means economic growth that does not result in job creation. So this is a very sad aspect of economic growth कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े बट लोगों को पहले के मुकाबले ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला. नेक्स्ट वी कम टू सेल्फ रिलायंस. द थर्ड अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सेल्फ रिलायंस. डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग यूज ऑफ इम्पोर्टेड रिसोर्सेज. सेल्फ रिलायंस को हिंदी में कहते हैं आत्मनिर्भर होना. वी एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, शुरुआत में हमें हर चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, तो हमने ये चीज़ ट्राई की कि हम प्लानिंग के थ्रू जल्दी से सेल्फ रिलायंट बन जाए, जल्दी से इंडिपेंडेंट बन जाए, सच दैट कि हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड ना करना पड़े. और उसका एक वजह क्या थी, क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमारी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर ना करें. हमें पता है ब्रिटिशर्स ऑल्सो केम एज ट्रेडर्स, लेकिन इवेंचुअली दे बिकेम रूलर्स. तो हम नहीं चाहते थे कि अब इस स्टेज में डेवलपमेंट के हम किसी से इतना उधार ले लें कि वो हमारे को इकोनॉमिक हमारी डिपेंडेंस उन पर हो जाए. फाइन. To emphasize on self production of essential goods, especially food grains. शुरुआत में हमारे पास फूड की भी शॉर्टेज थी. We have already discussed that. तो ये गोल हमें सबसे पहले अचीव करना था, because for a newly independent nation, at least the population should be well fed. हमें उनको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी फूड की तो हमें खुद में पूरी करने की ज़रूरत थी. To develop technology within the country. ये एक चीज़ ऐसी है जो हम आज तक अटेन पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं. टेक्नोलॉजिकली हमने पहले से बहुत एडवांस किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक अप मॉडर्नाइजेशन एंड इक्विटी.